What is job interview? A job interview is a pre-arranged and planned conversation used for evaluating the suitability of a candidate for a particular position, or a meeting in which an employer asks the person applying for a job question to see whether that would be the right person to do that job. Or what is interview? A formal meeting at which someone is asked questions in order to find out if they are suitable for the post of employment. The key points of interviews. Success on a job interview depends upon your knowledge which you have and your self-confidence which you will have if you have knowledge of your subject as well. And then your good speaking skills. Number 4, thorough preparation, how much you are prepared even by look or by subject. Number 5, using interview strategies, that how you are using your interview strategies, which I have told earlier in my previous lecture about the interview. The interview is challenging. How? Because there are several factors responsible for making job interviews challenging. Which are these factors? Let's see. Number 1, growing competition in the education and in the market as well. Challenging demands of the job. Number 3, growing professionalism in the education and business world. That's why interviews are challenging nowadays. And number 4, increasing focus on the candidate's personal qualities. That is the increasing focus nowadays. So candidates should have focus on their own personal qualities, which I have discussed in my previous lecture as well. And number 5, changes in the interviewing techniques. That every time the interview techniques changed, पहले आपसे इंट्रोडक्शन लिया जाता था कि आप अच्छे से इंट्रोडक्शन अपना प्रिपेयर करके जाते थे 1-2 पेजेस का, लेकिन टाइम के साथ साथ जब पता लगता है कि अब बच्चे इस चीज़ पे फोकस करने लगे हैं तो इंटरव्यू की टेक्निक को चेंज कर दिया जाता है. बट स्टिल द फोकस इज योर पर्सनल क्वालिटीज एंड हाउ मच यू नो अबाउट योर सेल्फ. अब इंट्रोडक्शन नहीं पूछेंगे डायरेक्ट, बट और तरह से आपको जानेंगे कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं. कैसे? आई विल डिस्कस दैट लेटर. Now the characteristics of the job interview. There are 5 aspects of a job interview. Number 1, planning. There is a proper planning of job interview. Number 2, purpose. What is the purpose of this interview? Then conversation, how you will coordinate with the interviewer. Number 4, two-way interaction. It's a two-way interaction ना, कि आपसे जो इंटरव्यू ले रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है, इन दोनों के आपस में क्या इंटरेक्शन है. तो दैट इज़ अ टू वे इंटरेक्शन, कि आपने वहाँ पे खुद को, अगर वहाँ 4 पर्सन पहले से मौजूद हैं तो आप समझें कि आप वहाँ पे 5th पर्सन है और आप उस कन्वर्सेशन में उस इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं. सो दैट इज़ अ टू वे इंटरेक्शन. आई आल्सो डिस्कस दैट अर्लियर. अगर आपने वो नहीं देखा देन आई विल गिव द लिंक इन द आई बटन. यू मे वॉच दैट. In number 5, informality. Next is pre-interview preparation techniques. I told you earlier about that, but again I am repeating the self-analysis. You have to do your self-analysis. Number 2, skills assessment. You also have to assess your skills according to the job. Number 3, company analysis. In which organization or institute you are going for the interview, you have to analyze of that organization or company or institute as well. Number 4, job analysis. What is the job for which you are going to interview? You have to analyze that job also. What are the responsibilities in that job? I will discuss all these aspects or techniques in detail. So you have to be with me till end. Number 5, subjective revision. That is also very important. It gives you confidence. And number 6, developing intervening file. So developing intervening file is very important. You must have to focus on that. No any document should be missed during the interview. Then your all confidence will be shut down. Now first of all, self-analysis and what is involved in self-analysis. Number 1, identify your background. You have to identify your background.
योर बैकग्राउंड मीन्स व्हाट्स द बैकग्राउंड ऑफ योर नेम, आपका नाम ये क्यों रखा, किसने रखा, डेट ऑफ बर्थ क्या थी, कौन सी फेमस पर्सनालिटीज़ इस डेट में पैदा हुई या इस मंथ में पैदा हुई, या आपका जो नाम है इस, और कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनका ये नाम है, या ये नाम कुरान पाक में कितनी दफ़ा आया है, आपके नाम का मतलब क्या है। और जो पर्सन आपके उस बर्थ मंथ में जो भी फेमस पर्सनालिटी उस मंथ में पैदा हुई है या उस डेट में उनकी भी बर्थ हुई है या उनकी भी कोई ना कोई इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसके बारे में भी आपको हाँ नो होनी चाहिए, कि इससे पता लगता है कि आपको अपने नाम से कितना ज़्यादा प्यार है। आप इस्लामी मंथ देखें तो आप कौन सी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर हम अपना ये कैलेंडर देखते हैं जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और अगर हमारे जो देसी मंथ्स होते हैं अगर वो भी देखें तो उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डे क्या है, टाइम क्या है। सो दैट इज़ आल्सो द इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ, that how much you know about yourself, you know about your name's background. Number 2, career. You have to focus on your career, that what is your career, what you want to do, and after 5 to 10 years where you want to do yourself. Number 3, what are your goals, what is your vision, what are your aspects, so that must be clear. Number 4, accomplishments. Number 5, achievements. Number 6, special interest and hobbies. So you must have to keep in mind all these points for self-analysis. Then analyze your skills. You also have to analyze your skills. Skills assessment is the process of analyzing your skills in terms of the skills required for the position you are seeking. So there are two types of skills. First one are learned skills, the skills which you learned. For example, teaching, marketing, driving, planning, management, public speaking, administration, programming, consulting, foreign languages, training, supervising, data processing or listening, etc. So these all skills are learned, which you learn from anyone else. And the second is intuitive skills, which you have in your own, which are your own skills, which is your personality. So that is your stamina, your courage, your creativity, your analysis, your leadership, your team building skills, your imagination, your boldness, your efficiency, your motivation, your patience, your sincerity, discretion and foresightedness. So all these skills are also just in the interview. So you must have to be aware of these skills. Either these are learned or either these are intuitive skills. Next, research the organization or institute. For which organization or institute you are going for the interview, you must have the knowledge about that. So, researching an organization involves gathering basic information about the nature, operations, status, structure, growth rate, and activities of the organizations and institutes. Either you are going for FPSC or PPSC, you must have the knowledge about that organization. Next is there are many ways to research the organization. The first and easiest is visiting the web page of that institute or the organization. So the candidates must have basic information about the organizations, which includes चेयरपर्सन कब हायर हुए, कब से कब तक रहे और नेक्स्ट कब आए, उन्होंने कब ज्वाइनिंग दी, वो एक्टिव हैं या फिर परमानेंट हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ रेट क्या है. You have to know about the work culture about that institute, major areas of operations, then hierarchical structure of the organization, recent developments and policies of that institute, and what are the focus of the activities of the organization. So you must have the basic knowledge about all these points. Next is job analysis. Now for which position you are going for the interview, you must have to analysis of that job as well. Job analysis will provide you broad information about the position. You should try to answer the following questions before facing an interview. And now what are these questions?
Number 1. What does this job involves? Number 2. What are the special duties? Number 3. What are the challenges of this position? Number 4. What are the skills and abilities needed for this job? So you have to modify your strengths and weaknesses according to these job responsibilities. Number 5. What are the prospectus? Number 6. What are the chances of career enhancement? Number 7. What is the level of professional knowledge needed? Number 8. What are the responsibilities associated with this job? Number 9. How is the position different from similar positions at other organizations? फॉर एग्जाम्पल आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन के लिए या पब्लिक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वाई यू आर नॉट गोइंग फॉर द private organizations, or why you are not joining the private universities or colleges, then you must have the answer of that question as well. And what is the difference between degrees? अगर आप किसी एक इंस्टीट्यूट में ही पढ़ा रहे हैं तो उसमें डिफरेंट डिग्रीज हैं, बीए है, बीएस है, एमएससी है, एमएस है, एमफिल है, पीएचडी है, तो इन डिग्रीज में फ़र्क क्या है, ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए. Number 10. How you will rate yourself for this position. Number 11. Why you are interested in this job. And number 12. After 5 or 10 years, where you see yourself. So that is the job analysis. You must have to be prepared of that as well. Then next is public relation, from where you will get all that information. So in order to research the job, you may use several available resources such as the internet, library, the organization's public relations office, public working under the organization, and particularly alumni of that institute. So these are the different resources from where you get the information that where the job is available. Now you have to revise your subject knowledge. Revise your subject for clarity and confidence. That is very important. The interviewer may test your knowledge on a wide range of topics related to burning, social, political, economical, scientific, engineering, environmental issues, disasters, national and international affairs, controversial topics, key newsmakers, and many more. That means कि आपके सब्जेक्ट नॉलेज से हट के एक वाइड रेंज तक भी आपका नॉलेज वो असेस कर सकते हैं. सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड अबाउट दैट एज वेल. एज एन एजुकेशनल पर्सन यू आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेयर ऑफ सच मैटर्स. सो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इन सारे मैटर्स से भी अवेयर हों. सो देयरफॉर रीडिंग न्यूज़पेपर, watching news on television, and visiting informative websites to brush up your knowledge about recent developments in different areas is essential. So ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इन हैबिट्स को डेवलप करें ताकि आप अपने नॉलेज को ब्रश अप कर सकें और अप टू डेट रह सकें. कहाँ पे फॉर एग्जांपल डिज़ास्टर्स की बात करें तो नाउअडेज़ कहाँ पे सैलाब आया है, वहाँ पे कितनी हलाकतें हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है, कब आया है, उसकी रेशियो क्या थी. So these are all the current affairs. If you will read the newspaper or you will watch the television for watching news, then you will be updated and you can brush up your knowledge as well. Now develop the interview file. I told you earlier about that in the previous lecture about interview. Now let's talk again. Preparing for an interview demands a professional approach. Therefore, you should develop an interview file that may contain the following papers and documents. अब यहाँ पे प्रोफेशनल अप्रोच का मतलब है कि आपने अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऐसी फाइल में नहीं ले जाना है. आपकी वो एक प्रॉपर फाइल पेज होनी चाहिए जिसमें अलग अलग सेपरेशन होती है, ट्रांसपेरेंट पेपर्स अंदर लगे हुए होते हैं. आप वहाँ पे तरतीब से अपने डॉक्यूमेंट्स को लगाएं और उसको एक प्रोफेशनल अप्रोच कहेंगे कि आप जब अच्छे से उसका कलर फाइल का अच्छा होना चाहिए, लाइक ग्रे, ब्लैक या फिर ब्लू, नेवी ब्लू टाइप.
तो वो फाइल का कलर हो उसमें पार्टीशन हुई होती है, आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें, उसके अंदर रखें और फिर आपकी फ़ाइल रेडी है। अब इसमें हम क्या क्या लगाएंगे जी, आपका इंटरव्यू लेटर होना चाहिए, देन नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट्स, national identity card, experience certificates if you have, research papers if you have, then no objection certificate if you are already doing a job, then your domicile, your resume, and copies of all documents must be attested, and photographs that must be attested from the back side, and COVID vaccination card. And in last, relevant papers that might be needed during the interview. और ये जो भी इन रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपके इंटरव्यू लेटर पे लिखी हुई होती हैं कि दैट थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, और वो जिस तरतीब से लिखी हैं आपने उसी तरतीब से उनकी फ़ोटोकॉपीज लगा के अटैच करनी है और उसी तरतीब से वो आपकी फ़ाइल के अंदर भी अटैच होनी चाहिए। नाउ द प्रिपरेशन स्टेप्स, आइडेंटिफाई योर अचीवमेंट्स, जो हमने पढ़ा है हम उसको एक दफ़ा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर अचीवमेंट्स, दैट इज सेल्फ एनालिसिस। नंबर 2, कीप योर बेसिक्स क्लियर, फॉर एग्जांपल कंपनी एनालिसिस मस्ट बी क्लियर। नंबर 3, कीप फोटोकॉपीज ऑफ एसेंशियल पेपर्स, दैट इज जॉब एनालिसिस। Visit the website of the organization you want to join, that comes under the developing the interview file. Number 5, relate your skills to the needs of the job, that is revision. Number 6, keep your credentials ready. Number 7, identify your special interests and hobbies. Number 8, brush up your general awareness. Number 9, keep your original degrees, certificates and transcript. Number 10, analyze your background. Number 11, analyze your career goals. Number 12, identify your accomplishments. Number 13, list the skills necessary for job. Number 14, make an index of all documents for easy reference and location. हम इसको उसी तरतीब से इसलिए रखते हैं ताकि जब वो आपकी वहाँ पे वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास लिस्ट होती है, वो उसी तरतीब से उसको वेरीफाई करते हैं, तो वो जितना इजी होगा उसी तरतीब से लगाए होंगे तो उनके लिए उतना ज़्यादा इजी होगा। अगर आप आगे पीछे करके लगाएंगे, एक तो वो उसे अनपिन करेंगे, फिर उसको तरतीब देंगे, फिर दोबारा से स्टेपल करेंगे, तो वो आपके साथ कुछ अच्छा बिहेव भी नहीं करेंगे कि यार बच्चे को तो अपनी फ़ाइल ही मैनेज करनी नहीं आती, इसको ये नहीं पता कि डॉक्यूमेंट किस तरह से अरेंज करने थे, तो वो थोड़ा सा बैड इंप्रेशन जाता है। सो कीप इन माइंड कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंजमेंट उनकी ईजी रखनी है ताकि उनको ईजीली लोकेट किया जा सके। नंबर 15, फाइल द रेफरेंस लेटर। And that's it. I hope all is clear now. If still there is any confusion, then you may write in the comment box. I will try my best to give the answer. So in the next one, we will discuss the types of interview questions. So keep watching, keep learning and follow your curiosity. See you in the next one.